या ओके नो वरीज लाइक करके चले जाओ बस लाइक करके चले जाओ if I have even like 2 3 people watching it's fine I don't mind I don't mind अब तो आदत है okay welcome to the game week 19 deadline stream uh, a lot of game weeks happening right now so let's just quickly go through all of them right now not all of them मतलब go through the team news or injury news right now uh, a lot of things going on suspensions let me tell you okay एक मिनट 2 minutes में 2 million fam yeah exactly I think I've disappointed you a lot guys for by not appearing for the last stream I understand बहुत लोग wait कर रहे थे but yeah it's like sometimes I have priorities even though this is my you know एक मिनट रुक जाओ yeah this is my passive income so इतना ध्यान नहीं देता मैं इसमें ऐसे तो मतलब अपने रियल जॉब में कुछ ज़्यादा ही कमा रहा हूँ राइट so what's all of this then this is you see I'm wearing the same jumper the same sweatshirt of yesterday कुछ नहीं है मतलब मैं क्यों हूँ यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है I think yeah let's just go through news right now uh, oh wow now Gordon is in demand मैं जब 3 week से इसको लेकर रखा हूँ I was so glad that he's a differential but right now he's in demand तो गॉर्डन आ जाते हैं सबसे पहले उसके बाद लेट्स गो थ्रू टीम न्यूज कुछ है ओके देयर इज नो टीम न्यूज एडिसन स्टोन्स वॉकर नूनेज ग्रीनिश बोला था ग्रीनिश और फ्लैग्ड अभी सो के उठाऊं तो थोड़ा माफ करना प्लीज स्टार्ट सेमेनियो और पेड्रो लेट मी जस्ट मैंने पेड्रो को भेज दिया है रेज में लेट मी सी सेमेनियो the thing is, Semenyo is not on penalties, which and he's facing away versus and he's going away versus Fulham. Fulham at home are pretty good. They have now defeated 2-1. किसको हराया था Fulham ने? Fulham ने हराया था किसी को तो हराया था 2-1 हराया चेल्सी को तो Fulham will be in full confidence. I don't think Semenyo gets a lot of chances versus Fulham. So I will start João Pedro. Simple answer. Simple answer. इधर मैंने शेयर नहीं किया था. I was saying Fulham versus Bournemouth है. Fulham 1 versus Chelsea. Yes. पूरी हाँ मैंने मांगी थी चाय सॉरी चाय गाइस चाय yeah so Fulham has won versus Chelsea and has beaten them so उनको बहुत confidence होगा so I think you can start João Pedro instead of Semenyo even though Bournemouth is scoring a lot of goals it's coming through other players and not them not Semenyo unfortunately starting में Semenyo के बहुत सारे shots थे but Kluivert ने आके बहुत सारा covers बहुत सारा space cover किया and he's on pens as well hi Anushka good evening उसके बाद रिको खिलाऊं या अमाद let's just go through I think Ahmad because what City is going through right now you cannot predict so हम थोड़ा सा ओके 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 यार अभी भी मेरे को अबे लग रहा है कि यार हम लोग ने लाइक दे वर मेकिंग इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी कुडंट डू एनीथिंग वी वर जस्ट लुकिंग एट देम और कुछ नहीं इट्स अबे's फॉल्ट एक्चुअली पैडीज पता नहीं कहाँ थे ब्रो पेडो हैज बीन पुअर फॉर मी तो यस फॉर मी आल्सो मैंने उसको रेज ट्रांसफर किया मैंने 3 रेज ट्रांसफर्स किए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे but yes, let's just talk about Rico Lewis versus Ahmad because I think Rico Lewis, he's on my first bench versus Leicester, but new manager for Leicester and City not in great form. Pep Guardiola's 500 game, so it will be a big game for them. Hopefully, a comeback for City, and they need that consistent run of fixtures. Malab wins in those fixtures. So, but I would say start Ahmad just because I think Bruno भी नहीं है तो ब्रूनो का अगर नहीं रहेगा तो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द विंगर्स एंड दैट्स व्हाई आई गो विद अमाद कोलविल ओवर हॉल कोलविल ओवर हॉल
it's tough because Newcastle is finally coming back into, not finally, I think 4-5 गेम से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है न्यूकासल. उस हिसाब से आई थिंक पोटेंशियल, आई थिंक लुइस हॉल भी काफी अच्छा खेलता है, काफी आगे खेलता है. इन लास्ट मैच आल्सो ही वाज वेरी क्लोज टू एन असिस्ट. एंड let's just talk about एक मिनट, कोलविल वर्सेस हॉल. दिस इज अ टफ वन. This is a tough one. United away, just because of the fixture, I think I'll go with Colville. But it doesn't mean that. I think Hall has much more attacking threat uh, possibility. So clean sheet versus threat, your choice. या आई मीन बहुत डिसअपॉइंट किया, आई थिंक बहुत, मतलब मैंने रेज ट्रांसफर्स किए ना, मैंने तीनों, मतलब मैं, लेट मी टेल यू न्यूज इफ पीपल आर वाचिंग. कूनिया की लड़ाई हुई थी दो लास्ट वीक पहले, स्टाफ से मतलब लड़ाई हुई थी, तो एफए हैड चार्ज्ड हिम. ओके, चार्ज हुए थे उसके चार्जेस, बट उसका डिसीजन नहीं आया कि वो कब तक सस्पेंड होगा. कुछ आया ही नहीं कि वो सस्पेंड होगा कि नहीं. ओके, एंड व्हाट वन ट्विटर गाय, वो एफपीएल खेलता है, ठीक है, एंड व्हाट हिज जॉब इज टू लीक फेक न्यूज. तो कल या परसों रात, भूना करके एक है ट्विटर में अकाउंट, उसने फेक न्यूज स्प्रेड करी कि कूनिया इज बैंड फॉर 5 गेम्स. एंड यू नो व्हाट, एथलेटिक पोस्टेड दैट. एथलेटिक ने पोस्ट कर दिया, बोल दिया 5 गेम्स के लिए बैन है, बट कूनिया वाज नॉट एक्चुअली बैंड. सो दिस इज हाउ मैनिपुलेशन गोज ऑन ट्विटर. एंड उसके वजह से ट्रांसफर आउट का भी स्पाइक हुआ था, अगर आप ग्राफ देखोगे तो. या ओके, अभय की टीम पे आते हैं. लेट मी जस्ट, ओके, हम अपनी टीम में चलो बाद में करता हूँ, पहले अभय की टीम कर लेते हैं, देखते हैं अभय नीचे से, देखते हैं कहाँ पे. ओके, अभय has got 69 points. अभय, मतलब इस अभय is just I mean 69 points bro, come on. I'm impressed. फ्लेकन देखो, इतना फनी कैरेक्टर है. एक तो ब्रेंटफोर्ड को क्लीन शीट्स नहीं मिलती है, एंड जब क्लीन शीट मिली इतने महीनों बाद, वो इंजर्ड हो गया बंदा, वो पहले ही निकल लिया. So that's unlucky. I think Timber, Mazraoui, Aina, Johnson. I think United defensive assets को निकालने का टाइम आ गया, because we thought कि कुछ नया दिखेगा हमें with United, but they're still struggling with the same problems, and it's not going to get better because Bruno is out. So there's too much reliance on the defense. Maybe they can get a 0-0, but they will concede right now, considering what's going through them. Palmer, Salah, Bruno, Bowen, Jackson, Cunha, यंग, इंग्स को हटा प्लीज, अबे प्लीज इंग्स को हटा. FPL Buna is goated. I think is one of the most blocked or muted people in the community because बहुत लोग frustrated है उस बंदे से. और start both Holland, Grimaldo, Ben Semenyo, Pedro. That's a tough one. I'll start Pedro. So for Abey's team, he has Bruno Fernandes, who's a problem. I think I'll talk about the replacements. मैं अपना replacement ला चुका हूं, but I still think there are better replacements right now. Already had 6 saves in 30 minutes, massive haul dodged. Exactly. मतलब very unlucky for Flecken keepers because starting में भी Flecken managers or owners, because starting season में भी, season के start में भी काफी अच्छे fixtures थे जहाँ पे ब्रेंटफोर्ड को clean sheet लानी चाहिए थी. No good replacement for Ings. ईजैक का नाम सुना है आपने? ईजैक एक है, ईजैक एक बंदा है जो एग्जिस्ट करता है दुनिया में, एलेक्जेंडर ईजैक. सो आपके पास पैसे हैं, ठीक है, कल मैंने देखा था, तो प्लीज इस्तेमाल कीजिए एंड ईजैक को लाइए. ओके, सो अबेज टीम मिडफील्ड में आई वुड, अभी रिप्लेसमेंट्स में आएंगे क्योंकि मैंने अपना रिप्लेसमेंट किया था. फॉरवर्ड्स में अबे प्लीज आप ईजैक को लाइए, बिकॉज इट्स हाई टाइम. आई हैव मेड दैट मिस्टेक ऑफ नॉट गेटिंग ईजैक बिकॉज मुझे लग रहा था कि वो इंजरी प्रोन है, फिर से इंजर्ड हो जाएगा. 0.3 ब्रूनो को निकालो ब्रो, ब्रूनो को निकालो, एज सिंपल एज दैट. टेक आउट ब्रूनो. आई थिंक उसके अलावा डिफेंस में यू कैन डू सम रोटेशंस. डिफेंसिव एसेट्स की भी हम बात करेंगे, थोड़े फिक्चर्स के थ्रू जाएंगे. डिफेंसिव में सबकी गांड लगी हुई है, सो आई थिंक इफ यू हैव समवन लाइक रॉबिन्सन, स्टार्ट हिम. मैनचेस्टर सिटी को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते. लिवरपूल में आई हैव गोमेज, व्हिच इज, आई मीन ही इज कंसीडिंग एवरी गेम वीक. हेंडरसन इज हैविंग ग्रेट गेम वीक्स फॉर क्रिस्टल पैलेस. So that is a good thing because Crystal Palace is at home versus Southampton. So you can look at someone like Mitchell, or if you already have a Dean Henderson, then you don't need him. Okay, simple as that. Chelsea के भी है, Chelsea के I'm assuming you have a defender already.
सो डिफेंस में हमारे तो सबसे पहले आई से चेल्सी, बिकॉज चेल्सी के अभी भी रन थोड़े अच्छे हैं. उसके बाद इफ यू आई थिंक रॉबिन्सन इज नॉट अ बाय बट अ होल्ड. इफ यू ऑलरेडी हैव हिम जस्ट प्ले हिम. आई डोंट थिंक यू शुड बाय हिम राइट नाउ. डिफेंडर्स का मैं तुम्हें सिंपल सी चीज बताता हूँ, इतना दिमाग मत लगाओ, बिकॉज द फिक्चर्स फॉर एनी टीम राइट नाउ आर नॉट दैट गुड. लिवरपूल का लगता है कि हर गेम वीक में क्लीन शीट रखेगी, बिकॉज फिक्चर इज लाइक दैट. एक मिनट को चाय पी रहा हूँ. दिस इज गुड. By the way, this is the last game week for wildcard. If you have not played your wildcard, activate it. Wildcard खेलो. अबे, if you have not played wildcard खेलो. Spurs no, Southampton no, City no, Fulham I think Robinson, yeah, if you have him play him. And then I'll say defense में I'll say oh, maybe an Aston Villa defender, maybe for next two fixtures, two home fixtures. If you're looking for replacements, then only. And like last week, bankers for the weekend. What does this mean? सुरेश, मेरे को समझा इसका मतलब क्या है. तू खेल नहीं रहा. यू आर यूनाइटेड डोंट बी श्रेयन मेक अस अंडर. पैलेस डिफेंडर, या एग्जैक्टली. पैलेस डिफेंडर की आई थिंक इफ यू ऑलरेडी हैव डीन एंडरसन देन मे बी नॉट. if you already have Dean Henderson, then maybe not. Because Crystal Palace, Chelsea next. Chelsea के अगेंस्ट नहीं रखेगी. लेस्टर के अगेंस्ट आई डोंट थिंक रखेगी. वेस्ट हैम के अगेंस्ट रख सकती है. बेनफोर्ड के अगेंस्ट रख सकती है. आई डोंट थिंक लेस्टर और चेल्सी के अगेंस्ट रखेगी. सो इफ यू हैव द प्लेयर, होल्ड इट. प्लेयर्स टू बैंक ऑन फॉर पॉइंट्स. अच्छा, ओके. लास्ट वीक बैंकर्स. अच्छा, ओके, गॉट इट. थैंक्स पार्थ. So we'll talk about that, but let's go to my team. I've made 3 transfers and I've taken a -4. ये तीनों rage transfers थे. I was just too frustrated with my team. Defense में I have Raya. Midfield में I have defense में I have Raya, Tosin, Saliba and Gomez. I'm gonna stick with this for now. I think I'm missing Lewis Hall a bit, जिसको मैंने starting में लिया था, but फिर उसको transfer out कर दिया था because he was not assured a start. But last 5-6 games में he has been starting, not last 5-6 ज्यादा games में he has been starting. Midfield में I've gotten Rogers. I was thinking to get Luis Diaz, but he was out. उसके पता नहीं father को कुछ हो चुका है. And then Diogo Jota का कुछ मालूम नहीं. I wanted a Liverpool midfielder, but right now I feel the best one right now. Rogers मेरे को दिखता है next 2 games के लिए. Brighton at home and Leicester at home for 2 games. पैसे भी बच जाते हैं. And then 2 transfers in the forwards area. I've gotten CUNHA and ISAK, and I would be really disappointed if ISAK अगर CUNHA ban हो जाता तो. And ISAK को मुझे लाना ही था. देख, CUNHA का मेरा लाने का रीजन ये था, उसको मैं पहले क्यों नहीं लिया CUNHA को, because he was supposed to get banned last week, and उसके पहले I didn't think that he is much more direct towards the goal, even though the numbers are pretty good. एज अ मिडफील्ड जो भी तुम चांसेस क्रिएट करते हो, उसके नंबर्स बहुत अच्छे थे कुनिया के, बट आई डिडंट थिंक दैट ही वाज टू डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ द गोल. मे बी आई शुड हैव सीन मोर मैचेस. एंड उसके बाद इजैक, बिकॉज आई हैव मेड द मिस्टेक ऑफ नॉट हैविंग हिम. इट्स जस्ट just correcting my mistakes. Last game week maybe I wanted to get him. I had the money, but I just thought ki Solanke versus Nottingham Forest was not a bad fixture. Even today, Solanke versus Wolves at home is not a bad fixture. So I won't be surprised if Solanke outscores Isak, and that is how my season has been going on. Diaz not starting. उसके पिताजी को fever हो गया. So that's basically it. I have Diaz. Will he start this game week? I have no idea. Not at all sure. Let me just check. Diaz. I'm not sure, bro. एक मिनट रुक जाओ. लिवरपूल. उसके पिताजी बीमार थे, अब नहीं मालूम है. फीवर था उनको. Yeah, nothing new on Luis Diaz right now. I think आप ट्रेनिंग के पिक्चर्स देखो जाके. वरना I don't think he starts this game week. One asset that I really like for this game week is Cody Gakpo. Last few game weeks में, I think not just last few game weeks में, last 3-4 weeks में he has been looking very great, very good for Liverpool. But Luis Diaz has been performing top notch level. So Luis Diaz को center forward खिला देते हैं, उसको Gakpo को wings में डाल देते हैं. But Gakpo is a forward in the game FPL में, तो it's very tough to transfer out players for Gakpo.
ब्रूनो का रिप्लेसमेंट आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द मैनेजर्स हियर आर गोइंग फॉर गॉर्डन, जिसको मैं 3 गेम वीक से रखा हूँ. ही इज नो मोर अ डिफरेंशियल, which is the sad part because I like choosing players, or I like looking at the players who are not highly owned. And the first one, the most transferred in player of this game week is Gordon, which was not a surprise. देखो मेरी scouting थी 3 गेम वीक पहले, अब ये लोग चुरा रहे हैं बस और कुछ नहीं. 10-6-6. I thought Gordon could cover Isaac, by the way. नहीं यार, नहीं नहीं नहीं. I think the way game is moving right now, you have to evolve. You have to make rash decisions right now. I think you cannot be patient. Uh, I got Sar from, yeah, Bruno. We were coming to that, by the way. The thing is, the only part that scares me about Sar is that Eze is also back, which draws a lot of attention, a lot of, because Eze control करता है बहुत सारी चीजें, right? Eze नहीं होता तो the reliance depends on Sar. तो which means he's gonna try hard करेगा बंदा basically हर गेम वीक में, हर मैच में. बट जब एजे हो जाता है साथ में, देन वो इक्वल, आई थिंक एजे हैज मच मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो I am not so sure about Sar right now. Not a bad asset because he has been doing well in the last few game weeks. I sold Cunha last week because I had 2 free transfers and I thought ban was incoming. I mean, I don't blame you. Ban को इतना time क्यों लग रहा है? And he's not banned for this game week as well. So I'm kind of happy because मैंने अपने raise transfers कर दिए थे. Gordon, Sar, Rogers, Palmer, Iwobi, Madison. Madison, I think Madison is a very frustrating asset uh, because Spurs has a lot of scorers around them. Kulusevski, Jordan, Jordan कौन है? वो कौन है उनका राइट विंग में जो 7-in-7 मारा था उसने? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या था? ब्रेनन जॉनसन, जॉर्डन बोल रहा हूँ. जॉनसन, कुलुसेव्स्की, सोलांके, सॉन. सो उसके वजह से मैडिसन को ही डजंट गेट ऑन द स्कोर शीट, है ना? अगर ये सब प्लेयर्स थोड़े, एंड कुलुसेव्स्की ने बहुत इवॉल्व किया इस सीजन, सो बिकॉज ऑफ दैट मैडिसन का थोड़ा पोटेंशियल लूज हुआ है, इवन दो द नंबर्स आर डिसेंट. सो वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एसेट टू ओन. या जॉनसन, आई वाज टॉकिंग अबाउट जॉनसन. सो आई थिंक सबसे ज्यादा रिकमेंडेशंस जो आ रहे हैं, आई थिंक अगर लुइस डियाज was available, he would be my first option, but he's not for now. There's no clarity, so right now he's not available. Second में आ जाते हैं, I think I'll go for Gordon, because Gordon 2 home games, नहीं 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 2 home games नहीं, 2 very open games versus, एक मिनट zoom in कर देता हूँ, versus United and Spurs. Both don't have Spurs don't have defenders, and United, we know how United they are. So and उसके बाद सार के अगर हम फिक्चर्स देखें तो Southampton at home. Last game week maybe, if you follow my Instagram, I just suggested 2 players and one of them was Bowen because he was facing Southampton. So you have to target weak teams, as Suyesh also stated. In our group, we have a WhatsApp group, so Suyesh ने भी बोला था कि we have to target the weak teams. So that is what you can do. मतलब it is very straightforward. So if you feel कि मतलब Sar can do well versus probably the worst team in the league right now, go for it. And it's a home game, an added advantage. And next game week में भी Chelsea को खेल लिया. Chelsea भी अभी थोड़ा stable होते हुए दिख रही है, but it doesn't mean that they won't concede goals. And Selhurst Park में a lot of goals can come in, basically. I know, but I'm still saying he's not going to be consistent in FPL. I know. I'm just saying he's not going to be that consistent in FPL. क्योंकि सॉन है, कुलुसेव्स्की है, सोलांके है, बेनन जॉनसन है. इसका मतलब ये नहीं, it's one of those. Do I suggest him? Do I suggest you to buy him or to hold him? That is the difference ना. अगर आपको बाय करना है तो आई वुड से स्टे विथ योर मिडफील्डर जो तुम्हारे पास है ना? Just stay with her, because I don't think Madison is an outright good choice, है ना? वो there's a difference. ठीक है. Yes, तो हमने डिफेंडर्स में बात की. हम डिफेंडर्स में स्टिल वी आर स्टक एट चेल्सी, क्रिस्टल पैलेस डिफेंडर. एंड देन उसके बाद इफ यू हैव रॉबिन्सन आई एम नॉट श्योर दैट Robinson, I don't know. He looks good. If you have him, just play him.
ज्यादा ज्यादा ट्रांसफर्स मत करो अनलेस यू डोंट हैव समवन लाइक इजैक, वो जिसकी ओनरशिप बहुत बढ़ती जा रही है। मैंने बहुत रीच ट्रांसफर्स किए। कूनिया को जब तक बैन नहीं मिल रहा तब तक वेल एंड गुड। हेलो भाई। And Diaz is also minutes risk, better than an Arsenal attacker right now. Again, Arsenal attacker में we have Odegaard, Martinelli, Trossard. I think last game week में मैंने बोला था कि I prefer Odegaard over those two because Odegaard के minutes थोड़े ज्यादा होते हैं। Martinelli कभी कभी बहुत wide हो जाता है। So I would say first I will say Odegaard, but इसका मतलब अब क्या है ना, अब Arteta is playing both Jesus and Havertz together. So one of the wingers can always get benched. So the best one in terms of Arsenal attackers, now I'll choose Odegaard. He's on pens. I don't know. Huh, he's on pens. Yes, he's on pens. He plays 90 minutes and Saka के बिना उसको ज्यादा space मिलती है. Simple. For my team, I'm second in your league. Okay, let me just check. uh, 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 Second in the league. Pretty good. Fabianski. I. Yeah, was this a clean sheet? Yeah, this was a clean sheet, which is a bit sad for Fabianski, who knows. Okay. Alexander Arnold. I don't know how you are second in the league with this defense. मतलब दो Liverpool defenders के साथ how are you on second in the league, but it's fine. Amad Diallo, Havertz. Wow, it's good to see some variety in my league, which is pretty good. Robinson, Kokis. I think you should start Robinson. I think you should start Enzo. Start Enzo. I think you can bench João Pedro. João Pedro first bench. Goalkeepers may just play Sanchez. I don't think you have a lot to change, but I think if you have money in the bank, I can go from João Pedro to Isak. Is someone that Isak is the one that you can look at because he's facing a vulnerable Man United right now. Okay, I've already made the change. Okay, fine. फिर तो I was thinking of I would have played Enzo versus Ipswich because yeah, it's gonna be an open game and Chelsea are playing like that. So I would start Enzo, try to start Enzo, and I think defensively, I think you need to get rid of one of the Liverpool defenders in the upcoming game weeks. Not right now, maybe, but in the upcoming uh, game weeks. So right now, it's not something that you should rush to for making the transfers for the Liverpool defenders, but I think you can think about that. Captains, I think captains पे आते हैं. Captains पे आते हैं. Okay, my captaincy is right now on Salah. I think Salah because I think एक minute West Ham में someone was एक minute was what happened with West Ham last game week. One अच्छा 1-0 जीते थे. I think Salah just because in the great form he's right now. I think it's one of those कि even though the options of the मतलब दूसरे teams के options बहुत अच्छे हैं, पामर के बहुत अच्छे हैं, but जब साला बहुत अच्छे form में होता है then I think it will be very tough for you to go against him. But I wouldn't say कि मतलब going with Palmer is a wrong decision, but it could backfire considering how Liverpool are right now and how they are making a comeback, how every win is important for them. Even though उनको नहीं फर्क पड़ता वो 9-10 पॉइंट ऊपर है, लिवरपूल want to win. That is what mentality. I think I've said this a million times, and even though Manchester City treble जीती थी, but I'll still say कि the two teams in the world who have like a really good mentality is first one is Real and second is Liverpool. चाहे लिवरपूल में कितने भी problems हैं, we kind of forget that Liverpool was also having injury issues at the start of the season. Trent has injury issues till now. Robertson was out, and midfield में a lot of players got back. So they always do well. I mean, I don't blame you. I don't blame you. And मैं Cunha को लाया हूँ because I was really frustrated with João Pedro and Solanke. Yeah, it's kind of I don't know how FA is working so slow because बाकी जो भी players का suspensions होता है वो within a week आ जाता है. So मतलब what are you thinking about? Is इतना give clarity. अगर उसको खिलाना है तो खिलाओ, नहीं खिलाना है तो मत खिलाओ. ठीक है. Sanchez, Trent, Kokes, Salah. Okay, no, this was. Acha, yeah, I checked your team, right? I have doubts about whether to start Kokes over Robinson.
I think home game for एक मिनट रुक जाओ. Yeah, I will say home game for Robinson. I will start Robinson. Fulham at home has been pretty great always. Fulham at home are probably, I think the record at home is pretty good. So I'll go with Fulham's defender. Yeah. So yeah, so I think I would have gotten Luis Diaz अगर वो available होता, but Rogers is not bad. I think home games, two home games, I can totally depend on him. Uh, let me just check कि Arsenal defenders. Let's just see Arsenal का. It's just that how Arsenal is shaping up right now and how they are switching from normal wingers, मतलब normal wingers to मतलब अब वो up front two खिला रहे हैं ना, Jesus भी खिला रहे हैं और Havertz भी खिला रहे हैं. I think Cody Gakpo भी inside forward है. तो a lot of confusion between who to pick in the Arsenal between the Arsenal assets. So that वो confusion तो है ही. I removed check my रुक Cunha either way has tough fixtures now. I did Jackson to Watkins. Yeah, Watkins में I think a lot of जो भी wild card कर रहे हैं ना, they are moving towards Watkins. Because I think John Duran को भी red card मिला था. तो Watkins has two home fixtures, Brighton, Leicester जैसे Rogers है. Uh, I don't know. I think Watkins has to show something before I get him in. Probably the next transfer for managers in the upcoming game weeks. We can also not ignore Haaland. I think Haaland का कभी ना कभी तो comeback आने ही वाला है. तो I think this is a good fixture for City to show something. But वो तो हर game week में ऐसे लगता है कि City is gonna concede. Last game week में अगर आपने देखा होगा, they were so fucking tired to. If Everton was providing attacking numbers versus City, you know how shit they are right now. Uh, Yeah, I mean, Jackson has been doing really bad in front of the goal. I must admit that. But even though Chelsea fans are satisfied with him because उसका off ball work rate बहुत ज़्यादा होता है. So क्या हो? हाँ. So his off ball work rate is pretty good. So उसे अब से Jackson has been doing well. But yeah, in terms of FPL, he should have done better because the fixtures were like that. Yeah. उसके बाद एक में टीम देखते हैं सिद्धार्थ की. Siddharth was doing pretty well now, as far as I remember. 222 0562. 64 points cells. Oh yeah, मतलब इसको तो भूल ही गए. I think Nottingham Forest का डिफेंस I think थोड़ा लकी रहा है. I think Nottingham Forest का डिफेंस थोड़ी लकी रहा है. मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके I'm not saying कि मतलब not it was a bad. I think owning cells was the wrong choice or anything. I think starting maybe game week 5-6 के around a lot of people were moving towards cells. But I think if you he got a clean sheet versus Spurs, Brentford, and yeah, मतलब that is kind of unexpected. ठीक है. Um, by every asset is not going to return every week. Please your expectations a little bit. Yeah, exactly. But I think वही है ना. मेरे तो आई थिंक मैं इतने डिफरेंशियल्स लेकर चलता हूँ ना, तो मेरे रैंक को बहुत असर पड़ता है. इवन दो आई हैव अ गुड गेम वीक, आई गेट अ रेड एरो, मतलब बिकॉज आई डोंट हैव हाईली ओन्ड प्लेयर्स. एंड क्रिस वुड अगर आके मार देगा तो मेरी रैंक डूबेगी ही. फोर रेड एरोस इन अ रो. आई नो ब्रो, आई नो. आई एम एट 620, आई डोंट नो, 680 के समर रहते हैं. Can I find the code? Where can I find the code? Which code? Achha, go to the points and see in the river. Yeah. If you want me to look at your team, uh, log in through your phone or malab, through a browser or a laptop, and then points mein click karo. Click on the points, and then in the URL you will have uh, you can see your team code. You can share that with me, and I can view your code or view your team. Or you can join my league, and in that way I can just view your team from here. तो आप मेरे अगर आप लीग्स में देख रहोगे तो पूरा रेड एरो ही है, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है. 680 के राइट नाउ इज माय रैंक. मतलब इवन दो आई हैव गॉट अ गुड स्कोर लास्ट गेम वीक, आई डिड नॉट हैव हाईली ओन प्लेयर्स, एज सिंपल एज दैट. या एग्जैक्टली, गोलकीपर्स में तुम्हें ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ता है. सो इट्स लाइक स्टार्टिंग से नॉटिंघम फॉरेस्ट ने अच्छे डिफेंसिव नंबर्स दिखाए हैं, सो जस्ट स्टिक विथ योर कीपर. 1-2-1-0. ओके, वी हैव अनदर टीम. 1-2-1-0 913.
61 points, -4 भी लिया था. Okay, Timber, Gabriel. At this point, I think we should just go with triple Arsenal defense, ना? Because Saka भी नहीं है. So it's probably the best मतलब decision right now maybe. Flecken, Arnold, Alexander Arnold. I think Arnold, I don't know. He has to justify his price to me. Then फिर मैं उसकी तरफ देखूंगा. Palmer, Bruno, Salah, Sar, Ahmad. Luis, João Pedro, Greaves. I think your first thought would have been to just bench Bruno Fernandes and start João Pedro. Midfield में I would say Rogers and Gordon, but I'm not so sure if you have money, no money in the bank. The problem is you have Bruno Fernandes, but if you feel like having if you want Gordon or Rogers, someone like that, then you can make the transfer. If you want to save the transfer, you can just play João Pedro and bench Bruno Fernandes. I also want to start Robinson, but I want to risk it and start Kirkis as a differential player. I'm just saying that Fulham at home is a pretty good team. He's a differential for sure. I think Robinson is, I won't say is that highly owned. Okay, he's highly owned, but not that highly owned. Uh, yeah, because we are at that point of the season where even the big teams are not keeping the clean sheets. So if you have someone like Robinson at home versus जिसको भी खेल रही है Fulham, I think is playing Bournemouth, right? So I would say I'll prefer the home team. Mine says Salah cap, Dil says Palmer, need Ronnie to save me. I think Palmer, yeah, definitely is not a bad choice. Oh, I don't know. I don't know. I just don't want to go against Salah. I don't know. I'm not that brave right now. एक बार देख के बताना. I'm planning to get rid of Rico next week and use that money somewhere else. Uh, yeah, Rico will start. Play Sar or Semenyo. I'll go with Sar because at home versus Southampton, Southampton is a team to target for the upcoming game weeks. A lot of injuries, a lot of suspensions, not in great form. Even उनका keeper बहुत fuck up कर रहा है. So I'll go with Sar over Semenyo. Okay. Okay. So let's coming to the team. I'm happy that Tosin Adarabayo is still not much owned. I think एक गोल आता है ना एक सेंटर बैक का एक सीजन में एक गोल आता ही है. So I think I just want that from him and I can just transfer him out. I'm glad that he's differential. I'm glad that Chelsea के Disasi. I hope Disasi doesn't start over Tosin Adarabayo. I hope he doesn't because I think अभी defensive assets मतलब defensive choices कम है Chelsea के लिए and Tosin has been doing really well for Chelsea in the last few game weeks. Fans are really happy with him. So I think आने वाली I think Ipswich is a good fixture. I don't know clean sheet का नहीं. I'm not so sure, but Crystal Palace, Bournemouth at home, Wolves at home. I'm very happy with a Chelsea defender in my team. Got best fixtures for the next 5-7 matches, so I bought in Mateta and hope he performs. Yeah, hopefully he doesn't get rotated much as well, and Ketia is on the bench as well. So मतलब you have to be careful. I think Eze की तरफ बहुत कम लोग देख रहे हैं. I think Eze is a huge differential, but yeah, injury concerns, minutes concerns. But yeah, Eze is a good differential as well. Eze, I think I'll say is the differential of this week. So we have 11 minutes in, guys. So lock in your teams and yeah, it's just 11 minutes. Hopefully, I think Twitter may we'll get some league lineups because the first game, okay, 8, okay, 8, 8, 8:30, 8:30, 8:30. सिर्फ लेस्टर मतलब सिर्फ सिटी का I think सिटी का लीग आ सकता है. Let's just see. I think a lot of managers are moving towards Crystal Palace defender, which is not bad. I would go towards a Crystal Palace defender as well. If I already have Dean Henderson, maybe not. But yeah, I would move. It's not a bad defensive option, I think, Crystal Palace. Let's just check in Twitter if there is any uh City League news. City. Do we have any news or any injury news or any surprise news? Something like CUNHA ka? Doesn't look like it. Doesn't look like it. Yeah, captaincy is going to be, I think, captaincy majority, like, as I looked in the last game, but as I looked in the last game, I think Sar and Munoz are the best Palace picks. Yeah, Munoz though already has been showing great numbers. Right wing back, not even a right back. His touches in the box are pretty high. So I'm not surprised
कि मतलब a lot of managers are moving towards बट आई थिंक आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आप क्रिस्टल पैलेस का डिफेंडर ला रहे हो, मोनोस इज 5 आई थिंक, लेट मी जस्ट चेक द प्राइस, ही इज 5 और 5 पॉइंट, लेट मी जस्ट चेक। मोनोस इज 4.7। वाओ, आई थॉट ही वाज 5। आई थिंक इसका प्राइस रैंक नीचे हुआ है क्या कि ऊपर हुआ है, no idea. So Monas is 4.7. I thought he was above 5, which is pretty good. So I think the problem is that you can get Crystal Palace defenders for this game week, but after that they are facing Chelsea at home, which they will concede. मुझे लगता है because Chelsea just uh, मतलब consecutive जो उनका चल रहा है परफॉर्मेंस उस हिसाब से आएंगे तो आई डोंट थिंक दे गोना कीप अ क्लीन शीट. बट उसके बाद लेस्टर अवे, वेस्ट हैम अवे, आई डोंट थिंक, आई एम नॉट सो श्योर. सो if I would have, I think Dean Henderson is pretty good if you already have him. Palmer, inshallah, GG Wilpet. Yes, I think not a bad choice at all. You can go Brave for this game week. I think मुझे भी Brave जाना चाहिए. I think I'm feeling it about I'm feeling something about Isaac, but I've just got him in, so I'm very certain that he'll jinx me. So I'm kind of right now staying away from him. I think CUNHA भी काफी अच्छा option बन जाता है because Spurs are without their main defenders. I think pretty obvious why you should start Cunha. There's no, I think, argument regarding that. I have transferred out Solanke. तो सोलांके का मुझे थोड़ा आई थिंक बहुत दर्द होगा मुझे अगर सोलांके स्कोर करेगा, which is very much possible. ऐसे गेम्स में सोलांके स्कोर करता है, but it will really hurt me because I've held him for so many game weeks and I've not gotten in Isaac just because of Solanke. So if Solanke scores, I think it will be a it will be like that will hurt me for sure. Snow Salah is a different game. Yeah, exactly. I think Liverpool, या मैं ज्यादा हाइप कर रहा हूँ बट या लिवरपूल ऐसे फॉर्म में ब्रो, यू कैन नॉट, इट्स टफ टू गो अगेंस्ट साला, दैट्स द इशू. मतलब रैंक्स में एंड ऐसे फॉर्म में बेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रो, इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ फॉर श्योर. साला इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ. सो या आई थिंक गोल्डन ग्लोब्स में उसका अवार्ड मिलना चाहिए था. बट या ब्रो, रोनाल्डो ब्रो, व्हाट डज रोनाल्डो, क्या फूकता है बंदा. I want to have that because रोनाल्डो बोलता है 38 39 40 डिग्रीज. ऐसे तो आईएसएल इज बेटर ब्रो, ऐसे तो आईएसएल इज बेटर देन लीगा भाई. आई डोंट अंडरस्टैंड भाई. ऐसे तो आईएसएल में 39 38, अब हाउ डज दैट मेक सेंस. कतार में भी 39 डिग्रीज था ब्रो. मतलब it shows, no, it just shows how desperate he is after so मतलब still he's so desperate with the comparison. I don't know. Matlab, it's just he's just making it worse for himself. Yeah. So I think अगर हम points की बात करें, okay, we have 6 minutes in, guys. 6 minutes left. Also, guys, just a reminder: if you have not played your wild card, play it this game week because इसके बाद expire होने वाला है. इसके बाद आपको एक नया wild card मिलेगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने इस गेम वीक में नहीं खेला तो नेक्स्ट गेम वीक में आपके पास 2 वाइल्ड कार्ड होंगे. ऐसा नहीं है. अगर आपके पास एक वाइल्ड कार्ड है जिसको आपने यूज नहीं किया, वो एक्सपायर हो जाएगा, गायब हो जाएगा. So make sure you use your wildcard, you activate your wildcard, and wildcard में आप unlimited transfers कर सकते हैं. Should have kept. Now don't give me this. भाई ये मत करो अब तुम लोग, तो मुझे गिल्ट मत दो अभी, ठीक है. ऑलरेडी मैंने, it was a race transfer because I don't know. Still contemplating between Salah, Palmer, chasing. या आई मीन देखो, एक पहले सोलांके की बात कर लेते हैं. हाँ, उसके आई थिंक odds are better of Solanke to score because home game है. But yeah, I just don't care about that right now. मैंने pot upside chasing try कर ली with Solanke. बाकी टीम का करूंगा मैं अभी भी, ऐसा नहीं, अभी भी मैं हरामी हूँ, मिस्टेक्स करूंगा मैं. बट हाँ, fuck Solanke for now. Still contemplating between Salah, Palmer, chasing Grang for fuck's sake. Yeah, I mean, ये तुम, आई थिंक जब आपका सीजन बहुत बुरा जा रहा होता है ना, तो आप रिस्क ज्यादा लेना प्रेफर करना चाहिए. बिकॉज व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन. और ही गंदी रैंक हो जाएगी, है ना. और ही आप डिसअपॉइंटेड हो जाओगे, और ही आप डिस्प्रेशन में चले जाओगे, है ना. तो अगर आपकी गंदी रैंक होती है तो आपको और रिस्क लेने चाहिए, और डूबो, है ना. गलती से चल गया कुछ भी तो you can chase a lot of rank. That is the मतलब chasing upsides जो मैं सोलांके के साथ कर रहा था, but it didn't work out for me. तो मैं rage करके I just rage transferred him out. But yeah, I mean I think I think
Around 6 game weeks back, I was at 130K. 6 game weeks back, I was 130K. Right now, I'm at 680, 680K. सोचो आप, ये अपसाइड चीजिंग कर रहा हूं मैं. Do you think Havertz is gonna perform? It's very tough. It's very tough to predict this because Jesus भी खेल रहा है and basically दोनों को ड्रॉप करना पसंद है. It's so funny कि Jesus is also not an outright striker. Havertz is not an outright striker. दोनों को फॉल बैक करना पसंद है. Who's going to be much more direct? I think Arsenal के मैंने games कम देखे हैं, so I would not lie. Uh, uh, ओके. हाँ. सो दोनों फॉल बैक करना पसंद करते हैं. आई हैव नॉट वॉच आर्सेनल्स गेम्स, सो आई हैव नो आइडिया. बट मैंने जितना पहले देखा है, इसलिए मैं ओडेगार्ड को ज्यादा प्रेफर करता हूँ. सो आई थिंक हैवर्ट्स इज नॉट अ बैड चॉइस. इट्स अ गुड पन टू हैव, गुड डिफरेंशियल टू हैव. But it's not someone that I would transfer out right now. It's a decent asset to hold on to, but I don't think he will haul. There's a difference between scoring and hauling. I think he can get an assist or a goal, but I don't think he's gonna haul. Okay. तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रही थी. सोलांके गोल मार रहे थे, जाओ पेड्रो गोल मार रहे थे, बट क्रिस वुड वाज हॉलिंग, इजैक वाज हॉलिंग, कूनिया वाज हॉलिंग एंड रैंक मेरी गिरती जा रही थी, है ना. सो इवन माय डिसीजन वाज नॉट रॉन्ग. इट्स जस्ट दैट द अदर प्लेयर्स वर ओवर परफॉर्मिंग. कूनिया ने ओवर परफॉर्म किया है. भाई तेरी स्पीच से इंस्पायर होकर सार कैप्टन करने जा रहा हूं ब्रो. डूबो, डूबो, मरो, डूबो, doesn't matter. 3 minutes to go. I was 190K, once 570K, and that is why you should watch my streams, ताकि आपकी रैंक नीचे हो. Yes. For 7 games I was on K and Salah, and then Salah happened. Yeah, never capped him in either of those K weeks. I mean, अब तू साला के ऊपर गुस्सा निकाल रहा है. मतलब तू साला के ऊपर गुस्सा निकाल रहा है. सीरियसली, सीरियसली साला के ऊपर गुस्सा कर रहा है, जो आपने, जिसने लास्ट 8 सीजन्स में आपके गेम वीक को चलाया है, उसको आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो आप. आई एम सॉरी बट गोइंग फॉर कोकेस ओवर रॉबिन्सन, फक इट. या आई मीन यू कैन जस्ट रिस्क इट. आई थिंक लास्ट गेम वीक में बॉर्नमथ गॉट अ क्लीन शीट व्हिच इज गुड थिंग. आई थिंक तूने, आई थिंक इट अ बिट हर्ट यू बिकॉज यू डिडंट स्टार्ट कोकेस इन द लास्ट गेम वीक. सो तेरे को वो गिल्ट हटाने के लिए आप उसको स्टार्ट कर रहे हो. बट हाँ, मतलब obviously manifesting a Watkins brace. Yeah, I wish Watkins does something, कुछ दिखाए अपना finally, uh, because season start से is not been that great. I think starting में भी बहुत big chances उसने miss किए थे. Let him show his worth and then maybe I'll get him. रुको, रामोस को फोन करता हूँ. Yeah, sure. You ain't gonna catch me, buddy. Okay, okay. Yeah, I think just yeah. So this is my team. 1 minute to go, guys. Lock in your teams. Uh, I'm kind of satisfied. बस -4 है. So hopefully इतना भी बुरा game week now. I think -4 में अगर कैप्टन परफॉर्म नहीं करता है तो it's gonna be a big red arrow for me. I'm starting with a -4, starting with a one step back already. साला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है. Palmer, I see a lot of differential captains. 1 minute to go. I think less than 1 minute to go. So lock in your teams. I'm going with Salah right now. होपफुली बॉक्सिंग डे के बाद दिसंबर में वही कंसिस्टेंसी रहेगी साला की तरफ से. आई थिंक टेम्पटिंग सबसे ज्यादा पामर लग रहा है. सबसे ज्यादा पामर टेम्पटिंग लग रहा है अभी. इप्सविच अवे. लेट मी जस्ट चेक पामर का अवे रिकॉर्ड. 18 पॉइंट्स. ओके, 2 पॉइंट्स. Okay, it's a tough one. It's a tough choice. Clearly not an easy choice. I'm going with Salah right now. I think Liverpool has to keep some clean sheets, but you cannot concede one goals like randomly ऐसे इधर उधर. Okay. Okay. So the deadline has passed. It's 6:30 right now. Deadline has passed, and I'm playing Ahmad over Rico over João Pedro. I think that there's clean sheet here for Manchester City. Uh, Ahmad and Rico over João Pedro. I think. Okay, मैं फिर से क्यों पढ़ रहा हूँ? Okay. हाँ. So it's like, yeah. I mean, there's a possibility. There's a possibility. It's just that I think City does not have a lot of defenders right now. But yeah, I mean, it's your choice. I think City. आई थिंक हर गेम वीक में ऐसा ही लग रहा है. अब मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ क्योंकि अब हर गेम वीक में लगता है कि सिटी इज गोना लूज बिकॉज एवर्टन के अगेंस्ट इफ यू आर कंसीडिंग काउंटर अटैक्स and then you are tired to fall back, then I think City didn't look good to me. मेरे पास भी रिको लुइस है. So I mean, not a bad decision to make. It can, if he gets a clean sheet, it's pretty good because I think अभी लीग में कोई भी टीम नहीं है जिसमें आप 100%
अब सॉरी लीग में कोई भी टीम नहीं है जिसके ऊपर आप 100% डिपेंड कर सकते हो फॉर क्लीन शीट. इस गेम वीक में मे बी फॉर क्रिस्टल पैलेस बिकॉज एट होम वर्सेस साउथहैम्पटन इज लिटरली नॉट डूइंग एनीथिंग. Deadwood. Okay, so I think deadline has passed, and this game week, mein, I think if my captain performs, I think I'll get a good score around 65. But if my captain doesn't perform, I think it'll be around 35 to 40. So yeah, so this is it for game week 19, guys. Thank you for joining, and make sure you hit the like button because I think it. हुए. Yeah, I think we've got 10 likes, which is pretty good. Like I think every stream if we get around 10 likes, it's pretty good. I think average to at least 10 banna chahiye, right? So thank you for this game week, guys. Thank you for